Hello everyone, this is Neha here and you're watching Health Grooming Lifestyle. Guys, in today's video, we are going to see two types of asanas which will help in reducing your waist fat and going to give you rounded butts. That means आपके जो buttocks हैं, आपके hips वाला area है, वहाँ पर मसल स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा होगी जिसके कारण जो हिप्स हैं वो राउंड बनेंगे, अच्छे बनेंगे और आकर्षक भी। तो आज के वीडियो में हम दो तरह के आसन जो देखने वाले हैं, दे आर वेरी सिंपल आसनाज एंड यू कैन प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, बट मेक श्योर कि आप 3 घंटे के अंतराल के बाद करें, यानी खाना खाने के 3 घंटे बाद ही ये आसन प्रैक्टिस करें। दीज टू आसनाज विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग योर स्पाइन। आपके वेस्ट फैट को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ आपके थाइस को टोन करेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि जो फिजिकली और मेंटली बैलेंस नहीं है जिनकी बॉडी, इफ़ यू आर हैविंग इनकरेक्ट पोस्चर, इट विल हेल्प इन डेवलपिंग योर करेक्ट पोस्चर एज वेल, गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्पाइन। स्पाइन की जो हमारी वर्टिब्रे होती है, जो कशेरुकाएँ होती हैं, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, it will help in increasing your height as well. You know, those people, especially the youngsters and the teenagers, like 18 to around 35 years of age, in this range, the people who lies in this range, it will going to develop their chest, their shoulders. You know, हमारी body का जो पूरा फिजिक होता है, इट्स गोइंग टू डेवलप योर फिजिक, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव योर हाइट। स्पेशली जिनकी हाइट कम है उनको हेल्प करेगा ये इंक्रीज करने में। उसके अलावा जो हिप जॉइंट होता है, इट विल गोइंग टू स्ट्रेंथन योर हिप जॉइंट एज वेल, एंड इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर एंटायर बॉडी एज वेल। इन शॉर्ट, आई वुड से योर एक्सटर्नल बॉडी इज गोइंग टू बी गेट टोन्ड वेरी वेल। आपके चाहे कमर की बात करें, चेस्ट की बात करें, आपके शोल्डर्स की बात करें, आपकी थाइज की बात करें, हर तरह से एक टोन्ड जो बॉडी होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज टू डू कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जस्ट टू गेट दैट अट्रैक्टिव बॉडी एक्सटर्नली। गाइज, एक्सटर्नली दिखने से ही खाली काम नहीं चलता, ये इंटीरियर यानी इंटरनली भी आप इतने ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, और एक्सटर्नली अगर ये दोनों आसनास आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये लाभ पूरे मिलेंगे। So guys, before I start this video, I request you all to subscribe to this channel. If you're new to this channel, do subscribe it, and don't forget to hit the all notification bell icon, because if you press the all notification bell icon, you will get all the latest updates from this channel. So without any further delay, let's start the video. Okay guys, the first one is a swaying palm tree pose or the Tiryak Tadasana. ताड़ासन तो अधिकतर सभी जानते हैं, जो ऊपर ऐसे उठा के just to increase your height like this. This is the dynamic one, and it is going to burn your fat more easily. So you have to make a distance of about 2 feet between your legs, and now just interlock your fingers. But before that, you have to fix your gaze on a particular point in front. किसी एक चीज़ पर आपको ध्यान टिकाना है। उसके बाद inhaling, raise your arms above the head and just interlock your fingers like this. You have to interlock your fingers like this and facing the palms. हथेली जो है वो ऊपर की तरफ फेस करनी चाहिए above your head, and stretch as much as possible above the head. Okay, and now just exhaling, bend to the right side. Exhaling, just hold your breath. Now you don't have to move forward or backward, or don't try to twist your trunk. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर झुक रहे या पीछे जा रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं. No, it should be in alignment with your body like this. Hold for some time, for a few seconds, and then just release and come to the upright position. Inhaling, and this is just release your hands. Again repeating on to the next side. Inhaling, interlocking your fingers, facing the palms upwards, and then stretching it and moving or bending to the left side, and holding your breath for some time. If you can try to touch your knee, that's a good thing. That means your body is flexible. And now just come again to the upright position, releasing the arms, and just exhale. Now there is the second one is a dynamic. This is an easy one. The dynamic one, which I do on daily basis, is just interlocking your fingers, raising your arms, and just exhaling, inhaling, exhaling,
This I do on daily basis, and I have seen a tremendous change in my waist, in the reduction of waist fat. This you can also do. This is the dynamic one. Fine. Okay, now releasing your arms and just exhaling and just coming again to your starting position. So this is how the swaying palm tree pose is being done, or the Tiryak Tadasana. Now while practicing this asana, one thing has to be kept in mind, that you have to concentrate on a particular chakra as well. That means while swaying or moving your trunk and whatever, so you have to concentrate either on Manipura or on Mooladhara. Now guys, the second one comes the double angle pose or the Dvikona asana. Dvikona asana या फिर डबल एंगल पोज कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पैरों के बीच में कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी हो, 30 सेंटीमीटर अराउंड. एंड नाउ you have to interlock your fingers, inhaling in the starting position and then exhaling, coming forward, and hold your breath for some time. Your head should be in between your knees, and you have to concentrate on Anahata Chakra. Anahata Chakra lies where your heart is located, जहाँ आपका हृदय है उसके ही पास, यहाँ सेंटर में, in this position the Anahata Chakra lies. Now again come to the upright position, releasing your arms, inhaling, and then now this is how this double angle pose or Dvikonasana being done. Now the dynamic one is also there, which I practice on regular basis. You don't have to keep a distance in your feet, you have to just stand straight on your feet, and now interlocking your fingers, inhaling, and now exhaling, bend your knees, and you just have to do like this, inhaling, exhaling, inhaling, exhaling, inhaling. Fine. So now you have to release your hands slowly and gradually. Put your palms on the floor and just be in Padahastasana, touching your head to the knees. Don't force yourself to touch the head to the knees. जितना हो आरामदायक स्थिति में कर सके. And now just come to inhaling, Namaskara Asana. In Dvikona Asana, guys, your chest, shoulders, and especially the upper muscles of the back and the shoulder blades, they get stretched. और वहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से आपका वो एरिया जो है, फैट बर्निंग वहाँ बहुत अच्छे से होती है. उसके अलावा आपके लोअर बैक का जो रीजन है और पैल्विक मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होती हैं. योर एंटायर स्पाइन गेट स्ट्रेच्ड एज वेल एज इट काइंड ऑफ increases the blood flow in the entire body as well. I have told you the simple as well as the dynamic one in double angle pose as well as in the swaying palm tree pose. Guys, I hope you like the information which I provided in this video. If you're liking this video, don't forget to hit the like button. You can also follow me on Instagram, Facebook and Twitter. There I also upload the regular videos. And if you're new to my channel or you haven't subscribed to this channel yet, do subscribe it, and don't forget to hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest video from this channel. Okay, then I will see you in the next video with something innovative. Till then, bye bye and love you all.